Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's session, we are going to discuss a problem which has we have for certain transactions with us, and what we have to do, we have to first generalize all of these transactions. We will make the general journal first, and then we will prepare ledgers, and in the end, we will prepare a trial balance. Right? First of all, let's see what's the problem is all about. Let's see the scenario first. Bob Sample opened the campus laundromat on September 1st, 2010. This is a business, this is a service kind of business. During the first month of operations, the following transactions occurred. So this is as Bob Sample is the only owner of the business, so it means this is a sole proprietorship business and the proprietor name is Bob Sample. He has opened a business termed as laundromat, campus laundromat. It's a kind of laundry business where you can wash your clothes and you can dry your clothes and make payment to the business accordingly. So first of all, read out the very first transaction and we are going to pass the general uh, entries over here in this journal. First of all, on September 1st, what had happened that Mr. Bob, the owner of the business, has invested $20,000 cash in business. It means what? First of all, we have to think about the accounts that are going to affect out from this transaction. So it is the very first thing is cash, and second thing is that who is going to invest that cash? That is the owner. So equity and the assets. These are the both accounts that are going to affect out. So we are going to pass a general entry like this. First of all, over here you can see the business the as certain chart of accounts, and they have mentioned that business is using number 154 for the laundry equipment and number 610 for the advertisement expense, number 301 for Bob Samples capital account, 306 for the Bob Samples drying account, right? So they have mentioned certain account numbers as well, and we are going to use the very same account numbers in their reference. Now, as Bob has invested $20,000 cash in business, where we are going to pass this entry in on September 1st, cash as an increase in asset will be recorded as debit. Cash increase in assets will be recorded as debit, and Bob Samples capital increase in owner's equity will be recorded as credit, right? So 20,000 to debit and 20,000 credit, and now we are going to narrate this transaction. Owner's investment of cash in business, right? This is a very first transaction. Now read out the second transaction. Over here it states that the company paid. Paid means we have made the payment. It means the very first thing, very first account that is involved over here is cash, that you have made payment of 1,000 cash. For what purpose you have made this payment? Over here the purpose is mentioned for the store rent for September. For the month of September you have paid the rent. So rent expense is the very first account and the cash is the second account. So we are going to pass the entry over here. Rent expense as an increase in expenses will be recorded as debit, and decrease in assets will be recorded as credit. So entry would be rent expense to cash, and the narration is paid September rent, right? In third transaction, what had happened? Purchased washers and dryers. So this is the laundry equipment. Purchased washers and dryers. How much? For $25,000. So this is the historical cost principle where we are going to apply this principle over here, that we are going to record all these assets on their purchase price. So we will record laundry equipments as 25,000 debit. And now let's see, you for this 25,000, you have paid cash of $10,000. You have made down payment of $10,000, and remaining 15,000 you have signed. What you have did, you have signed a note payable. That is also an interest bearing instrument. That is, you have to pay 12% interest on this, and it's a 6 months duration. It's a duration of 6 months. It means it's a current liability. Note payable is a current liability, and you have to settle this liability in within 6 months, and you have to pay the interest as well.
So now, right now, we are going to pass an entry that is laundry equipment debit. Increase in assets will be recorded as debit. Cash decrease in assets will be recorded as credit. And note payable increase in liability will be recorded as credit. And if you see, we are using the very same accounts. Like over here it was mentioned that laundry equipment should be have an account number of 154. Otherwise we are using the very same account reference number over here. Otherwise, in case if the account numbers are not mentioned, you can skip this column as well. Let's see the next transactions. Okay, paid 1200. Paid 1200 means cash. You are going to use the account cash because down payment has been made. Cash flow हो चुका है. So 1200 cash involved है इसके अंदर for a 1-year accidental insurance policy. So you have purchased an insurance policy which is going to give you a coverage of for the next 1 year, and this insurance policy costs you $1200 right now. So क्योंकि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है अगले पूरे साल की कवरेज के लिए, सो दिस इज टर्म्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस व्हिच इज अ करंट एसेट अकाउंट. Prepaid insurance because this is going to give you benefit in the coming future. और ये क्योंकि इसकी जो लाइफ है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड है, दैट्स व्हाई we will record it as prepaid insurance and we will place it in current assets, right? So increase in assets will be recorded as debit, plus you have the cash which you have paid, that is $1200 to the insurance policy, will be recorded as credit. Now the narration is that you have paid 1-year insurance policy, right? The next transaction is you have received a bill from the Daily News. This is an advertisement agency. You have received a bill costing $200. So this is, you haven't made the payment, you just received the bill. There is no any clue that you have made the payment. So एक जल्द से information आ रही है कि आपने सिर्फ bill receive किया, अभी आपने उसकी payment करनी है. So advertisement expense debit, as an increase in expenses will be recorded as debit. And accounts payable, because this is the payment which you have to make in the near future, that is liability account. Current liability, increase in liability will be recorded as credit. Now on the 20th of September, I'm gonna record another transaction, that is Bob withdrew. The owner has made withdrawals of $700 cash. So he has withdrawn, उसने withdrawings करवाई हैं $700 की, और क्या चीज withdraw करवाई है? कैश. अदरवाइज वो इसके अलावा एसेट भी withdraw करवा सकता था. So the entry would be drawings to cash. एंट्री देखते हैं. ड्राइंग्स, हमारा ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट. ड्राइंग होगी $700 पे डेबिट, डिक्रीज इन ऑनर सिक्योरिटी, और कैश डिक्रीज इन एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, right? And the last transaction is the company determined that cash receipts for laundry services for the month were 6,200. कंपनी ने खुद से डिटरमिन किया, कंपनी को भी वो पैसा रिसीव नहीं हुआ. कंपनी determined that cash receipts for laundry services, जो आपने laundry services दी है उसकी इस अमाउंट मंथ में अमाउंट कितनी बन रही है? $6,200. So cash debit 6,200 and sales revenue credit, as increase in revenue will be recorded as credit. Now what is the narration? You have received cash for the services provided. जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की थी वो आपने डिटरमिन कर ली है कि जितनी भी सर्विसेज हमने प्रोवाइड की थी उसके अगेंस्ट हमें टोटल कितना अमाउंट हमारी इतनी हो गई है, 6200 हुई है इस पूरे महीने सितंबर के मंथ में. Now we will have to make certain ledgers. If you can see, this is on the proper format. Ledgers are prepared on the proper format. We can discuss one ledger over here, but you can also prepare T accounts instead if you want to, because T accounts are comparatively much easy and less time taking to prepare. Otherwise, a basic general ledger format includes this 6-column sheet that includes date,
The explanation for which, due to which account we are going to make the debit or the credit, the reference number, the debit amount are placed over here, the credit amounts are placed over here, and the net balance, no matter debit or credit, is being placed over here. Now, if you see in the question, they have mentioned, okay, I'm going to show you the question once again. Okay, what they said? Okay, they already said they use J1 for the general page number, right? अदरवाइज अगर आप यहाँ पे अकाउंट्स नंबर मेंशन है तो आप इन अकाउंट नंबर्स को वहां पे भी मेंशन कर सकते हैं लेजर्स में भी, ठीक है. नाउ इफ यू सी इन द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इज बीइंग रिकॉर्डेड एज डेबिट. So in the very first transaction, we are going to place it on the debit side. In all other transactions, like in rent expense, cash is being paid, so it will be recorded as credit. So we will record it as credit. Let me show you once again. Okay, so you see the cash general over here, cash ledger. So now if you can see, तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शन थी जिनके अंदर कैश डेबिट हो रहा था वहां पे हमने डेबिट कॉलम में लिख लिया अगेंस्ट देयर डेट्स. और जहां पे ये देखिए ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी 30 वाली जिसमें डेबिट हुआ था 20,000 डेबिट कब हुआ था जब ऑनर ने बिजनेस में कैश में इन्वेस्टमेंट की थी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी तो हमने 20,000 डेबिट रिकॉर्ड किया था. और जो 30 तारीख वाले में कैश डेबिट कब हुआ था जब हमने लॉन्ड्री सर्विसेज से जो हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो 6,200 से हमारा कैश डेबिट रिकॉर्ड हुआ था. लेट मी शो यू वंस. ये देखें ये जो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी इसके अंदर कैश आपका डेबिट रिकॉर्ड हुआ था तो हम लोगों ने यहाँ पे भी यहाँ पे लिख लिया कैश डेबिट, ठीक है, 6,200. और जिन ट्रांजेक्शन्स में कैश क्रेडिट हुआ था वो हम लोगों ने क्रेडिट लिख ली. फॉर एग्जांपल 2 तारीख को अगर आपको याद हो 2 सितंबर की ट्रांजैक्शन, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें 2 तारीख में हम लोगों ने क्या किया था, रेंट पे किया था. तो रेंट हमने पे किया था 1,000. 3 तारीख की ट्रांजैक्शन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स कुछ बाय किए थे जिसमें हमने डाउन पेमेंट की थी 10,000 की. सो वो कैश हमारा आउटफ्लो हुआ, क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ था वहां पर जनरल में, वो हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया. उसके बाद 4 तारीख की ट्रांजैक्शन में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने 1,200 रुपया कैश दिया था. और लास्ट में 20 तारीख को जो क्रेडिट हुआ है वो यहाँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 20 तारीख में हम लोगों ने विड्रॉल्स किए थे. ऑनर ने अपनी पर्सनल यूज के लिए ऑनर से 700 रुपया निकाला था बिजनेस से, तो हमने वो 700 रुपया यहाँ से विड्रॉइंग्स जो है वो उसकी रिकॉर्ड की थी. तो जो डेबिट ट्रांजेक्शन थी कैश की वो हमने डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड की, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी वो हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड की. नाउ इट्स द टाइम टू कंप्यूट द बैलेंस कॉलम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट अमाउंट थी 20,000 वो हमने रिकॉर्ड कर ली, दैट इज अ डेबिट बैलेंस. That is a debit balance. 20,000 is a debit balance. Now the next balance 1,000 is a credit balance. Now always remember one thing, debit प्लस होते हैं, क्रेडिट प्लस होते हैं, लेकिन अगर एक डेबिट बैलेंस हो और एक क्रेडिट बैलेंस हो तो माइनस होते हैं, राइट. तो अब 20,000 का डेबिट बैलेंस है, 1,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इनको माइनस करेंगे. 20 माइनस 1,000 इट गिव्स राइज टू 19,000. अगेन 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है, 19 माइनस 10 गिव्स राइज टू 9,000 डेबिट बैलेंस. 1,200 रुपए का फिर क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो 9,000 जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट माइनस क्रेडिट बैलेंस, वी हैव डेबिट बैलेंस ऑफ 7,800. देन वी हैव 700 ड्राइंग्स जो हुई थी, क्रेडिट बैलेंस 7,800 माइनस 700, 7,100 का डेबिट बैलेंस. अब ये जो 6,200 का डेबिट बैलेंस है ये भी डेबिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस डेबिट डेबिट क्या हो जाएंगे, ऐड, रिजल्टिंग इन 13,300 debit balance. So cash has a ledger that has an ending debit balance of 13,300, right. एक और मैं आपको टी अकाउंट दिखा देती हूँ, अकाउंट्स पेएबल. ये उसका अकाउंट नंबर, उसका जो लेजर का नंबर है वो मेंशन है, नंबर 201, ठीक है.
यहाँ पर अगर आप जनरल एंट्रीज में देखें तो ये जो अकाउंट्स पेबल आपको नजर आ रहे हैं, इसके सामने आपको उसका अकाउंट नंबर भी नजर आ रहा होगा 201। इन तमाम ट्रांजैक्शन जो हमने इस दफा पास की हैं उसमें सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी जो अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड थी, दैट इज अकाउंट्स पेबल 200 से क्रेडिट हो रहे थे। तो हमने लिखा अकाउंट्स पेबल 10 सितंबर की ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में क्या हो रहे हैं, 200 से क्रेडिट हो रहे हैं, तो उसका एंडिंग बैलेंस भी क्रेडिट है, दैट इज 200। सिमिलरली कैपिटल को अगर आप देखें तो वो एक ही ट्रांजैक्शन में था जहां पर हमने ऑनर ने कैश इन्वेस्ट किया था बिजनेस में। सो वहां पे भी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था। मैं एक दफा आपको फिर दिखा देती हूँ ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बॉब सैंपल का अमाउंट क्या हुई थी, क्रेडिट रिकॉर्ड हुई थी, राइट। सो बॉब सैंपल क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे जो कैपिटल का अगर आप ये अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल का आप लेजर बनाएंगे, उसका अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे, उसमें सिर्फ एक ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और उसका बैलेंस भी कैसा होगा, क्रेडिट। और ये ट्रांजेक्शन किस डेट को पास हुई थी, 1 सितंबर को पास हुई थी। इसी तरह on the very same pattern you will prepare all the ledgers of all the accounts। जनरल के अंदर अगर 20 अकाउंट्स यूज होते हैं तो 20 ही लेजर्स बनाने पड़ते हैं आपको। वहां पे 30 अकाउंट्स यूज हो रहे हैं अगर जनरल में, तो आपको 30 लेजर्स बनाने पड़ेंगे। So after preparing all these ledgers, you have ended up in the ending balance of the ledger. Like cash has an ending debit balance of 13,300. So prepared insurance has an ending debit balance of 12. So you can see it's a debit balance. So it's an ending debit balance of 12. So laundry equipment has a 25,000 ending debit balance. Note payable has a 15,000 ending credit balance. So that's like this. We have come up to the ending balances of all the ledgers, and the last step now is the preparation of trial balance. Trial balance is a very first one-page statement which you are going to prepare, which gives you the crux of the first two steps. This is a 3 column sheet, but before this, you have to prepare the format. That is, you have to write down the name of the company first, and then you are going to write down the name of the statement that you are going to prepare. This is the unadjusted trial balance, because in the next stage, you have to make certain adjustments, after which we will prepare the adjusted trial balance. And in last, we will mention the date on which the accountant is preparing the statement. Right now, it is September 30th, 2010. And this is a 3 column sheet. In the very first column is about accounts. Over here, we will mention accounts details. And the next column is of debit. And the last column is about the credits. Now, what we have to do, we have to list down all the ledgers ending balances over here. So you can see cash has an ending balance of $13,300. Prepaid insurance, you can see prepaid insurance has an ending balance of 1,200 debit. So prepaid insurance, we will write it down. There is an ending balance of debit balance of $1,200. Now, same likewise, you have to prepare this unadjusted trial balance by placing the ending balances. Like in over here, the laundry equipment has a debit balance of 25,000. The drawings have a debit balance of 700. The advertisement expense has a debit balance of 200. The rent expense have a debit balance of 1,000. Otherwise, we have liabilities on honors equity and revenue have a normal credit balance. Let's see in this case, no note payable has a 15,000 credit balance, accounts payable 200 credit balance, capital Bob's sample capital has an ending credit balance of 20,000, and the sales revenue has an ending balance of 6,200. Now what you have to do, you have to sum all the debit amounts, and this in this particular case they are amounted to $41,400, and you have to sum up all the credit column, and it gives rise to the credit amount, that is 41,400. In all the situations, the unadjusted trial balance must be equal. The debit side must be equal to the credit side. If it is so, it means you have somehow आपको एक अश्योरिटी मिल जाती है कि आपका ट्रायल बैलेंस ठीक बना है और पिछले स्टेप्स भी कुछ ठीक हुए हैं। हाँ, अगर प्लस माइनस की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अकाउंट ऑफ करता है। अगर आपने इसका बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने लेजर्स
में प्लस माइनस में कोई मिस्टेक की है, अनरजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस की प्लस माइनस में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, या आपने कोई अकाउंट सही से पोस्ट नहीं किया। अगर आपने जनरल जनरल का कोई एक अकाउंट भी आपका मिस हो गया लेजर्स में पोस्ट होने से, तो उससे भी आपका अनरजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस का रिजल्ट पॉसिबल है कि वो इक्वल ना आए, राइट। अदरवाइज कुछ गलतियां ऐसी हैं, जैसे अब ये तमाम मिस्टेक्स हैं जिनको आपका ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट कर रहा था। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ने जनरल एंट्री गलत लिख दी है, लेट्स से कि उसने कैश टू कैपिटल के बजाय कैश टू नोट पेबल कर दिया है, तो ये वो गलती है जिसको ये अनरजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस लोकेट नहीं कर पाएगा। मतलब आपका अनरजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा, बस ये वो जो मिस्टेक है उसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो कुछ मिस्टेक्स हैं कैलकुलेशंस की, प्लस माइनस की, जिनको ये आइडेंटिफाई कर लेता है, अदरवाइज तमाम मिस्टेक्स को ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता।